Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, I already discussed about the aircraft characteristics and components of aircraft. Today, I discuss about the payload and range. As you know, payload is the load of the passengers and cargo, and range is the aircraft traveling in kilometers or mile. So this is an example, aircraft air weight characteristics and the weight. This is an characteristics of an aircraft. Maximum structural takeoff weight is 2,20,000 lbs. Maximum structural landing weight is 1,98,000, and zero fuel weight, operating empty weight, maximum structural payload weight, and fuel capacity. Here you can see if we add operating empty weight plus maximum structural payload, then we get zero fuel weight. This is 182,513. In operating empty weight, this is the weight of empty aircraft with chairs or seats and one or two pilots. This is operating empty weight. And maximum structural payload in payload, we considered passenger load and cargo load. So reserve fuel is 1.25 hours. Average speed in this aircraft is 550 miles per hour, and fuel burning is 22.8 lbs per mile. This is aircraft characteristics, and we find the payload and range. इट्स मीन कि हमने ये फाइंड करना है कि कितने वेट के साथ ये एयरक्राफ्ट कितने माइल्स तक ट्रेवल कर सकता है, तो हमने वो कंसीडर करना है. फर्स्ट, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज इक्वल टू मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वो वेट है जिसके साथ मैक्सिमम वेट लेके वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है. उसमें ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट प्लस मैक्सिमम स्ट्रक्चरल पेलोड वेट प्लस अलाउेबल फ्यूल. मीन्स कि अगर हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लेते हैं और उसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो पे लोड है वो मैक्सिमम होगा. पे लोड आपके पास मैक्सिमम गिवन है 57,000 के मैक्सिमम. अगर हम उस पर पैसेंजर्स और कार्गो का लोड करते हैं तो हमें हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो उसकी रेंज क्या होगी. तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट प्लस मैक्सिमम स्ट्रक्चरल पे लोड वेट प्लस अलाउेबल फ्यूल. कि हमें इतने वेट, अगर हम इतना पे लोड लगाते हैं लेके जाना है तो हमें उस वेट को लेके जाने के लिए कितना फ्यूल अलाउ करना पड़ेगा. So maximum takeoff weight is equal to 2,20,000 given in the question, and operating empty weight is also given, and maximum structural payload weight is also given. Here we find add these and subtract from this, we get allowable fuel. This is 37,487 lbs, which is allowable fuel. But allowable fuel में हमें माइनस करना पड़ेगा ट्रिप फ्यूल, बिकॉज अलाउेबल फ्यूल में हमारा रिजर्व फ्यूल भी ऐड होता है. रिजर्व फ्यूल ट्रिप फ्यूल के अलावा होता है. रिजर्व फ्यूल जस्ट इन एमरजेंसी हम यूज करते हैं. तो रिजर्व फ्यूल आपके पास क्वेश्चन में उसने क्या है 1.25 आवर्स, मीन्स के 1.25 आवर्स आपका एरोप्लेन रिजर्व फ्यूल पे चल सकता है. तो 1.25 का मतलब ये कि 1.25 मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पीड 540 मल्टीप्लाई बाय कितना वेट बर्न होता है एक माइल के अंदर, वो 22.8. तो रिजर्व फ्यूल का हम निकालेंगे तो उसका जो वेट निकलेगा, वेट वो 1.25 आवर्स 540 की स्पीड के साथ और एक माइल पे 22.8 एलबीज फ्यूल बर्न होगा, तो आपके पास रिजर्व फ्यूल आ जाएगा 15,390 एलबीज. सो आपका ट्रिप फ्यूल या रूट फ्यूल क्या होगा, अलाउेबल फ्यूल माइनस रिजर्व फ्यूल इज इक्वल टू ट्रिप फ्यूल या रूट फ्यूल. तो रूट फ्यूल आ गया. अब रूट फ्यूल इट्स मीन कि आपका इस फ्यूल के साथ आप कितने माइल्स कवर कर सकते हैं. तो रेंज एट मैक्सिमम स्ट्रक्चरल पेलोड वेट, कि हमने मैक्सिमम स्ट्रक्चरल पेलोड वेट उस पर किया 57,000 का. तो अगर इतना वेट हम पेलोड अपना पैसेंजर्स और कार्गो का लेके जाएंगे तो हमें इतना फ्यूल चाहिए होगा, और ये फ्यूल इतना फ्यूल
चाहिए होगा उस, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैक्सिमम टेक ऑफ के लिए। तो वो फ्यूल अगर हम देखते हैं कितने माइल्स तक जा सकता है, तो हम इस फ्यूल को डिवाइड करेंगे 22.8 के साथ के 1 माइल में, क्योंकि 22.8 एलबीस बर्न होता है। तो आपके पास टोटल माइल्स निकल आएंगे 969 माइल्स। अब लैंडिंग वेट इज इक्वल टू मैक्सिमम टेक ऑफ वेट माइनस रूट फ्यूल। ऑब्वियसली जब आपका एक एयरक्राफ्ट मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में उसका रूट का फ्यूल ऐड होता है, अगर हम उसके रूट के फ्यूल को मीन से जब वो टेक ऑफ करता है तो उसके बाद उसने अपने एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना, और उसकी उस दौरान उसका फ्यूल बर्न होना है 22.8 एलबीस पर माइल के लिहाज से। तो आपका वो रूट का जो फ्यूल होगा उसका ऑब्वियसली जब लैंड करेगा तो वो वेट माइनस हो गया, कम हो गया होगा। तो फिर हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट माइनस अपने रूट का फ्यूल माइनस करेंगे तो हमारे पास लैंडिंग वेट आ जाएगा कि लैंडिंग के दौरान उसका वेट कितना होगा। तो मैक्सिमम जो वेट है आपका 2,20,000 माइनस 22,097 जो आपके पास रूट का फ्यूल निकला था वो माइनस करेंगे तो आपके पास लैंडिंग वेट आ जाएगा 197,903 एलपीस। और ये आपका ऑलवेज कम होना चाहिए मैक्सिमम अलाउेबल लैंडिंग वेट से। ये जो उस एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट आपके पास गिवन है अलाउेबल 198,000। तो आपका अगर उससे कम आया 197,903 इट्स मीन कि वो आप इजीली उससे लैंड कर सकते हैं। तो ये आपने इस का एक पार्ट में ये आपने बताया कि अगर आप मैक्सिमम पे लोड लेके जाते हैं 57,000 का तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो 969 माइल्स कवर करेगा। अब आपके पास मैक्सिमम प्री फ्यूल जो है मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी उस एयरक्राफ्ट की है 75,400 उसके पास एलबीस उसकी फ्यूल की कैपेसिटी है। अब उसमें से अगर हम ट्रिप फ्यूल निकालना चाहें कि मैक्सिमम ट्रिप फ्यूल इट्स मीन के अगर आपने फर्स्ट करें कि आपकी फ्लाइट लाहौर से कनाडा या लाहौर से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट के लिए जाना है तो आप कि मैक्सिमम ट्रिप फ्यूल कितना रख सकते हैं। तो वो 75,400 एलबीज उसका वेट है। तो उसमें से आप माइनस करेंगे अपना जो आपका रिजर्व फ्यूल है, इमरजेंसी फ्यूल है, क्योंकि वो आप ट्रिप फ्यूल में कंसीडर नहीं करते। तो आपके पास निकलेगा 60,010 एलपीस। रेंज विद मैक्सिमम फ्यूल। अब मैक्सिमम फ्यूल के साथ आप कितने किलोमीटर से कितने माइल्स का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं। तो 60,010 एलबीस डिवाइडेड बाय 22.8 के एक माइल में इतने एलबीस आपका बर्न होता है। तो वो उसको डिवाइड करेंगे तो आपके आएगा 2632 माइल्स। मीन टू से कि आप मैक्सिमम फ्यूल के साथ इतने माइल्स कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसके साथ कितना होगा is equal to operating empty weight plus maximum fuel plus allowable payload। मतलब कि ये है कि अगर हमने इतने माइल्स कवर करना है तो उसके लिए हमें कितना पेलोड डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात अब हमने अपना फ्यूल मैक्सिमम कर दिया। लास्ट स्लाइड में हमने क्या किया था, अपने अपना पेलोड मैक्सिमम किया था, उसके मुताबिक हमारा जो फ्यूल बचा था वो हमारे पास बचा था 22,000 का। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना फ्यूल मैक्सिमम कर दिया। तो फ्यूल मैक्सिमम कर दिया तो ऑब्वियसली हमें 2,20,000 में से इतना तो हमारा फ्यूल आ गया। तो हमने फिर अपना जो पे लोड होगा, जो हमारे पैसेंजर जो कार्गो का वेट होगा, ऑब्वियसली वो कम आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट आपको पता है कि उसमें जस्ट आपकी सीट्स का वेट, आपके एरोप्लेन का वेट और आपके पायलट्स का वेट आता है, प्लस मैक्सिमम फ्यूल प्लस अलाउेबल पे लोड। मैक्सिमम फ्यूल इसलिए लिया है क्योंकि हम रूट फ्यूल में अपना जो इमरजेंसी फ्यूल है उसको काउंट नहीं करते, बट क्योंकि वो आपके वेट में तो आना है, उसके जब आपका एयरप्लेन होगा इमरजेंसी उसका वेट तो होगा, तो उसमें हम फिर मैक्सिमम फ्यूल ही लेंगे। तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट प्लस मैक्सिमम फ्यूल प्लस अलाउेबल पे लोड, कि हम मैक्सिमम फ्यूल के साथ कितना वजन अपने पैसेंजर्स और कार्गो का पे लोड डाल सकते हैं। तो इधर से आपका वो निकल आएगा अलाउेबल पे लोड, इसको प्लस करें इसमें से माइनस करें तो अलाउेबल पे लोड निकलेगा आपका 19,087 एलपीस। सो ये आपको शो करता है कि अगर आपने शॉर्ट
पाथ के लिए अगर लाहौर से इस्लामाबाद या लाहौर से कराची तक जाना है तो आप क्या करते हैं, अपना जो पे लोड है वो मैक्सिमम कर देते हैं, क्योंकि वो रूट आपका शॉर्ट रूट है, उसमें आपका जो फ्यूल है वो आपको कम चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें अपना पे लोड मैक्सिमम कर देते हैं और फ्यूल क्या क्या होता है आपका वो कम हो जाता है। बट अगर आपने लॉन्ग रूट के लिए जाना है, लॉन्ग रूट के लिए जाना है तो अपना फ्यूल आपने मैक्सिमम कर दिया है, तो जहाँ पे आपका फ्यूल मैक्सिमम हो गया, मीन टू से फ्यूल का वेट आ गया, तो आपका जो पे लोड होगा वो ऑब्वियसली कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि 19,000 LB पे लोड के लिए हमें अगर हम उसमें डालेंगे तो वो 2632 माइल्स तक जा सकता है। और अगर हम 57,000 पे लोड डालेंगे तो वो 969 माइल्स तक कवर कर सकता है डिस्टेंस। फेरी रेंज मतलब ये है कि अगर हम उस पर कोई पेलोड नहीं डालते, कोई वेट हम नहीं कंसीडर करते, जस्ट आपका फ्यूल बर्न होता है, तो उसका वो कितना मैक्सिमम जा सकता है। खाली जहाज आपका टेक ऑफ और लैंड के दौरान टेक ऑफ के बाद कितना पेलोड के बगैर डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो है जी 3307 माइल्स। जैसे जैसे हम पे लोड कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपके माइल्स इंक्रीज होंगे। तो यही आपका है था पे लोड रेंज। एक आपका पे लोड और रेंज में क्या डिफरेंस है, तो इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में ये देखें, इसके वाई एक्सिस पे पे लोड इन पाउंड्स के ये वेट है आपका पे लोड का, जिसमें कार्गो और पैसेंजर्स का वेट है, और रेंज इन न्यूटिकल माइल्स, और इतने माइल्स ये आगे जा सकता है। तो ये फर्स्ट आपका जो निकला था वो ये था आपके पास कि अगर आप उस पर मैक्सिमम पे लोड 57,000 का इस पर लगाते हैं, तो उस पे 57,000 अगर आप पे लोड उस पर लेके जाते हैं तो वो कितने माइल्स कवर करता है, 960 माइल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आएगा 57,000 और 960 माइल्स, और 57,000 आपका ये बना है, ठीक है, ये पॉइंट, और इधर से 969 माइल्स ये बनेंगे आपका पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे निकाला है कि अगर आपका ट्रिप फ्यूल ये आपके पास ये होगा, उसके साथ आपके पास पे लोड आपके पास अगर 19,000 का हो जाएगा, तो आपका जो रेंज हो जाएगी वो 2632 हो जाएगी। तो ये 19,000 आपका जो पे लोड है उसके साथ आपकी 2632, ये 19,000 वाली पॉइंट आया, और ये 2632 वाला पॉइंट आ गया कि इतने माइल्स तक कवर कर सकता है। और फेरी रेंज क्या होगी कि अगर आपका पे लोड 0 होगा, कोई वेट नहीं डाला आपने उस पर, पैसेंजर्स रिक्वायर होगा, तो वो उनके बगैर 3307 माइल्स तक कवर कर सकता है। तो ये ग्राफ आपके पे लोड को और रेंज को शो कर रहा है। Effects on the design aircraft, size of aircraft, साइज ऑफ एयरक्राफ्ट किसी भी एयरपोर्ट के डिजाइन को कैसे अफेक्ट कर सकता है और क्या चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। विंग स्पैन, टैक्सीवे विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द ट्रैफिक लेन्स, साइज ऑफ गेट्स, एप्रन्स एंड हैंगर गेट्स विड्थ। अगर हम कोई टैक्सीवे डिजाइन कर रहे हैं और हमने देखना है कि दो टैक्सीवे के दरमियान कितना मिनिमम डिस्टेंस हमें देना पड़ेगा, वो हम डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर, कि दोनों एयरक्राफ्ट के विंग्स के मैक्सिमम साइज एयरक्राफ्ट के विंग का कितना होता है। उसको देखते हुए हमें ट्रैफिक लेन डिजाइन करनी पड़ती है। उसके अलावा जो हम एप्रन्स या हैंगर्स के गेट्स हम डिजाइन करते हैं, उसकी विड्थ कितनी रखती है, वो भी आपके मैक्सिमम जो आप एयरक्राफ्ट के विंग का साइज होता है उसको देखते हुए हम उसको डिजाइन करते हैं। Length, taxiway width on curves, size of apron and hangers, aircraft capacity। तो एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी को देखते हुए, उसके विंग साइज को देखते हुए और कर्व्स को देखते हुए हम अपने एप्रन के साइज को और हैंगर्स के साइज को कंसीडर करते हैं। हाइट ऑफ हैंगर्स गेट, एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट के हाइट होती है, टेल की हाइट, उसको देखते हुए हम किसी भी हैंगर जहाँ पे उसकी मेंटेनेंस वगैरह होनी है आपके एयरक्राफ्ट की, तो उसका हाइट भी हम इसी तरह कंसीडर करते हैं। टेल विथ, साइज ऑफ द पार्किंग एरिया एंड एप्रन, जहाँ पे आपने एप्रन में पार्किंग करनी है उस पर जो हमने मार्किंग करनी है वो भी उस मैक्सिमम एयरक्राफ्ट की टेल विथ को देखते हुए हमने उसको मार्किंग करनी है। उसकी मिनिमम टर्निंग रेडियस, जो टर्निंग रेडियस है उसको भी कंसीडर करना है। रेडियस ऑफ टैक्सी वेज, पाथ ऑफ द नोज एंड द मेन गियर। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने डिस्कस किया था कि मिनिमम रेडियस कितना होता है, वो हम नोज गियर और मेन गियर के मुताबिक अपना कंसीडर करते हैं।
45 डिग्री पे। कैपेसिटी प्रोसेसिंग काउंटर्स, passengers and baggage handling type and capacity of equipment, cargo area, size of the airplane। ये सारे टर्मिनल बिल्डिंग में आप जो बैगेज जो अपने सिक्योरिटी वगैरह चेक करवाते हैं, फिर कार्गो आपकी बुक होती है, और एयरप्लेन पे भी आपका साइज का देखते हैं, एयरप्लेन का साइज कितना है, वहाँ पे एयरक्राफ्ट आपका पार्क करता है और वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है आपके कार्गो की। Speed, reduce journey time, increase frequency of the operation, broadening of the air network। स्पीड आपकी एयर नेटवर्क पे विंड की आपकी डायरेक्शन किस तरफ से आई है, और अगर आपने रिड्यूस जर्नी टाइम करना है तो आपकी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। और नॉइस, लोकेशन ऑफ द रनवे, फ्लाइट पाथ, कि आपका जहाँ पे एयरपोर्ट की रनवे है तो वहाँ की लोकेशन आपने देखनी है कि आपकी वो लोकेशन ऑब्वियसली आपकी रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए, और फ्लाइट का पाथ जहाँ पे वहाँ पे आपकी नॉइस कम होनी चाहिए। ये आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट है। ये एक चार्ट है जिसमें डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसको डिफाइन किया गया। जैसे A300 600 तो इसकी जो विंग स्पैन है वो आपका 147 फीट है। लेंथ आपकी कितनी है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट उसका इतना है, पैसेंजर्स वो इतने लेके जा सकते हैं, और रनवे लेंथ उसको इतनी रिक्वायर्ड है टेक ऑफ और लैंड के लिए। तो ये आप डिफरेंट एयरक्राफ्ट से कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, तो इस पे मैक्सिमम पे हम उसको डिजाइन करते हैं, डिपेंड करता है आपका एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक है या उस पर किस किस्म के एयरक्राफ्ट ने आके लैंड या टेक ऑफ करना है, तो इधर से हम रिकंसीडर करके अपने रनवे को डिजाइन करते हैं। एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स A B C D। A इज इक्वल टू, ये आपकी लिफ्ट फोर्स इस तरफ से होती है, थ्रस्ट आपका इधर से लगता है, और C पॉइंट पे आपका CG पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे मेन गेज होते हैं, वहाँ पे आपका वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट आपका डिपेंड करता है, और ड्रैग फोर्स बैक से लगती है। तो ये सारी फोर्सेस आपको एक वीडियो से मैं लिंक करता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके उस वीडियो से इन फोर्सेस का और इन फोर्सेस की डायरेक्शंस का। Currents in the air and complete their flight by undertaking many complex maneuvers. Have you ever thought of how the pilots are able to achieve this? Or what happens to the airplane when the pilot operates certain controls? In this and explore. Please check the description. Thank you. Modern airplanes are truly engineering marvels. They overcome highly turbulent and unpredictable currents in the air and complete their flights by undertaking many complex maneuvers. Have you ever thought of how the pilots are able to achieve this? Or what happens to the airplane when the pilot operates certain controls? In this video, we will explore how an airplane flies and how pilots are able to control an airplane in a logical yet simple way. We thank SimScale for lending their CFD support and making this video more informative. First, let's have a closer look at modern airplanes' wings and tails. One interesting thing you will notice is that they are not made as a single solid piece. The wings and tails of the airplanes have many movable parts. The most fascinating thing about the whole wing and the different parts of it is that they form a very special shape in fluid mechanics. That is the airfoil shape. Just by understanding the physics behind this simple shape will allow you to completely understand airplane physics. Let's learn more about airfoils. An airfoil produces a lift force when moved relative to the air. This lift force makes an airplane fly. How is this lift produced? The airfoil produces a downwash as shown. This causes a pressure difference at the top and bottom of the airfoil, and hence produces lift. This high-quality CFD analysis using SimScale software clearly illustrates this fact. Generally, the higher the angle of attack, the greater will be the downwash and therefore the lift force. A greater airspeed also increases the lift force significantly. Interestingly, in mankind's first successful flight, the Wright flyer also made use of this same airfoil principle.
Even though their airfoils were a simple curved shape, it was sufficient to produce a good downwash. More specifically, their airplane had 2 such airfoils. One more idea to increase the lift force is by altering the airfoil shape like this. The alteration in shape will definitely increase the downwash and the wing area, hence giving greater lift. In short, there are 3 techniques to increase the lift of an airfoil. Let's apply this airfoil knowledge to the airplane. If we activate the flaps and slats, it increases the downwash and increases the lift. The ailerons can move up and down, and for that reason, the lift force can decrease and increase respectively. At the tail of the airplane, you can see 2 attachments, the rudder and the elevators. By adjusting the elevators, you can control the vertical force on the tail. By adjusting the rudder, you can control the horizontal force. Now, let's get into the most interesting part of the video, controlling the aircraft using these simple wing attachments. Let's start with the takeoff part of the flight. To get the airplane to take off from the ground, what you have to do is increase the lift force using various techniques and make sure that this force is more than the gravitational pull. Pilots apply all of the 3 lift increase techniques together for a successful takeoff. First, the speed of the airplane is increased by increasing the thrust of the engines. When the airplane's speed is high enough, the pilots activate the flaps and slats. Lift is further increased due to this. When the airplane is ready for takeoff, they activate the elevators upwards. The tail force tilts the airplane as shown, and the angle of attack of the airfoil will be increased. The lift is suddenly increased due to this, and the airplane takes off. Usually, an angle of attack of 15 degrees is maintained for the takeoff. In all these discussions, we are talking about the engine's thrust. But how is the engine able to generate thrust? Modern airplanes use special kinds of engines called turbofan engines for this purpose. In this, the fan's reaction and the reaction force of the exhaust give the necessary thrust force. By burning more fuel, the pilot can achieve more thrust. The fuel of an airplane is stored inside the wings. After the takeoff, next comes the climb phase of the aircraft. As long as the engine's thrust is more than the drag, the speed of the airplane will keep on increasing. The greater the speed, the higher will be the lift force. This will cause the airplane to go up. When the airplane reaches level flight, there won't be any acceleration or change in altitude. You can see that with this condition. The thrust should be exactly equal to the drag, and the lift should be exactly equal to the weight of the airplane. Now, let's discuss the most crucial part. How does an airplane change direction? You might think that just by adjusting the rudder, you would be able to do this. The rudder produces a horizontal force, and this force can turn the airplane. However, such a direct change in direction will cause discomfort to passengers, and it is not a practical method. To make a turn as shown, what you need is a centrifugal force. Let's see how pilots achieve this centrifugal force. Pilots just make one aileron go up and the other aileron go down. The difference in the lift force will make the airplane roll. In this roll condition, the lift is not vertical. The horizontal component of the lift can provide the necessary centrifugal force to bank the aircraft. This way, the pilot can make a turn of any radius depending upon the angle of roll and the speed of the airplane. However, this banking technique has some drawbacks. When you keep one aileron up and the other aileron down, the drag forces induced on the wings are not the same. This will cause the airplane to yaw. This phenomenon is known as adverse yaw. The rudder has to be operated simultaneously to prevent the adverse yaw. The way pilots control the different wing attachments and the whole airplane is illustrated in this animation. In practice, a control computer accurately manages all these wing attachments
using a fly-by-wire system. To descend the airplane, what pilots do is decrease the engine's thrust and keep the nose of the airplane down. You can see this is exactly the opposite of the climb operation. As the airplane loses speed, it gets ready for landing. At this stage, the flaps and slats are activated again. These devices also increase the drag. To increase the drag further, a wing attachment called a spoiler is also activated. The pilots use one more trick here to reduce the stopping distance, which is reverse thrust. Here, the engine covers open wide, and the air which was supposed to go backwards is forcefully directed forwards. This will obviously generate reverse thrust and will make the stopping of the airplane easier. The CFD simulations we saw in this video were produced by SimScale, a powerful cloud computing-based FEA and CFD software. To perform complex CFD analyses using your normal laptop or PC, just create a free community account at simscale.com and explore. Please check the description. Thank you.